Good morning everyone. Welcome to our Hindi class. This is our third session. With the previous session, we have completed our first chapter. Okay, some exercise also we have done through WhatsApp. I hope all of you got it. Okay, there are some more works is left. Okay, let's do it. Take your textbook. Open page number 10. Page number 10, question number 3. सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं. This is true or false. You want to put tick or cross. अलग रंग रूप और वेश अलग होने पर भी हमारा देश एक है. This is correct or wrong? We are one even though our colors and dressing styles are different. Yes, it is correct. Then put tick. Then second one. जब हम लड़ते हैं तो माँ दुखी नहीं होती. जब हम लड़ते हैं तो माँ दुखी नहीं होती. Mother don't feel sad when we are fighting. No, it is wrong. Put wrong. हमें अपनी आज़ादी को हर हालत में बचाना है. We want to save our freedom. Yes, it is correct. हमें घर घर में लोगों से भेदभाव मिटाने हैं. We have to eliminate discrimination from each houses. Yes, that also correct. Then बापू ऊंच नीच के भेदभाव की भावना को मिटाना चाहते थे. Yes, Bapu wanted to eliminate the difference between high-low mentality. Yes, it is correct. Then listen next one. दिए गए शब्दों में आई मात्रा सामने लिखे. Write matras of the given words. Here we have to separate the symbols from the given words. One example here given. All of you look here. लेकिन this is the example. This is the example. We want to separate. दिए गए शब्दों में आई मात्रा सामने लिखे. Means write matras of given words. Okay. We want to separate from this word. Okay. In la एक की मात्रा. Look. In la एक की मात्रा. That we want to write here separately. Then in ka e की मात्रा. Okay. Then second one bhasha. Bhasha. In first one in bha a की मात्रा. In sha also a की मात्रा. Then third one bhai. Bhai. Listen here, first one a की मात्रा. Then in second one e की मात्रा. Then हृदय. हृदय. Okay, how to write हृदय? First you write ha, then here put r की मात्रा. हृदय. Okay. Here in first letter only have r की मात्रा. Then here da and ya amatri. That's why here no need to write anything. Then fifth one logo. Logo. In la o की मात्रा. Then in ga om की मात्रा. Om. Okay. Then sixth one bapu. Bapu. In ba a की मात्रा. In pa u की मात्रा. Okay. All of you understood? It is easy for you. Okay. 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 After this, all of you look here. Here given one yellow box. Okay. रंगीन शब्द किसी व्यक्ति स्थान भाव का नाम है. इन्हें संज्ञा कहते हैं. संज्ञा मीन्स नाउन. डू यू नो नाउन? The noun describes something that
a person, place or thing, isn't it? Noun is something that describe person, place or thing. Okay, but in Hindi along with this emotions are also considered as noun. Okay, in Hindi along with this emotions are also considered as noun. Listen here, here given one stanza of our poem. In that stanza some words are written in red color. That red colored word is noun. That red colored noun is indicate that is noun. धर्म और भाषा के झगड़े अरे कौन फैलाता, पूछ रही है दुखी हृदय से अपनी भारत माता. धर्म रिलीजियन, भाषा लैंग्वेज, हृदय हार्ट. ओके, दैट ऑल आर नाउन. इन द सेम वे यू वांट टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन. संख्या शब्द रेखांकित करें. यू वांट टू अंडरलाइन नाउन वर्ड्स. आज़ादी की आन की रक्षा, आज़ादी की आन की रक्षा करना अपना कर्म, देश हमारा सबसे पहले, देश हमारा धर्म. देश हमारा धर्म. Listen here, we want to underline noun words. Azadi, freedom. Okay, freedom, this is noun. And pride, कर्म, deed or action. देश हमारा सबसे पहले, here देश, country, here also देश, country. धर्म, religion. Okay, these underlined words are nouns. Because why? Because these all are our feelings, all are our emotions. Okay, then listen. Here given some creative activities, रचनात्मक गतिविधियाँ. देश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे क्या क्या कर सकते हैं. देश को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे क्या क्या कर सकते हैं. ओके, डू यू अंडरस्टूड? व्हाट चिल्ड्रन कैन डू टू इम्प्रूव द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री. Okay, here given 3 sentences. अपना काम स्वयं करें. Do your work yourself. अपना काम स्वयं करें. नियमों का पालन करें. Follow the rules. देश की संपत्ति का नुकसान न होने दें. Do not damage the property of our country. Okay, 3 more filling the blanks here. This one you want to do. This is your homework. Okay, don't worry children, if you make mistake you don't worry. Okay, this is you just try and write it. Okay, this is just for the improvement in your language. Okay, okay, with this our first chapter and its exercise have been completed. Okay, okay, now we can move on to the our next chapter. पाठ 2, चिड़िया का घोंसला. चिड़िया का घोंसला. चिड़िया मीन्स
What is the meaning of chidiya? Bird. Bird. Ka, घोंसला. घोंसला, nest. Bird's nest. Okay. Bird's nest. Dear student, this is one story. This is one moral story. Okay. There are two characters in this story. One is Akshar and that is one boy. Then a second one is his mother Rohini. Okay. Okay. Dear students, sometimes children are also teaches us very good, which make realize to our mistake, isn't it? Sometime happening like this. All of you listen to the chapter. एक दिन, when I am reading, all of you put your finger on the line. एक दिन रोहिणी घर की सफाई कर रही थी. उसे अलमारी के ऊपर घास फूस तिनके नजर आए. उसने उन्हें झाड़ू से नीचे गिरा दिया. वह तो चिड़िया का घोंसला था. उसमें से चिड़िया के 2 अंडे नीचे गिरे और टूट गए. बाहर पेड़ पर वह चिड़िया बैठी थी. वह चूं चूं करने लगी. वह बेचैनी से पंख फड़फड़ाने लगी. रोहिणी को दुख हो रहा था. अनजाने में उससे गलती हो गई. बेचारी चिड़िया के अंडे टूट गए. चिड़िया का शोर सुनकर अक्षर भी वहां आया. उसने पूछा, मम्मी क्या हो गया? चिड़िया ऐसे क्यों कर रही है? रोहिणी ने बताया, बेटा मैं सफाई कर रही थी. तिनके और घास फूस हटा रही थी. उसमें अंडे थे, वे गिरकर टूट गए, इसलिए वह परेशान है. ओके. ओके dear student, now I will write the difficult words on the board. You should underline those words in your textbook and write their meanings above the words. Okay. Use pencil only. दिन, डे, सफाई, क्लेanलीनेस, घास, ग्रास, तिनके, स्ट्रॉस, झाड़ू, ब्रूम, घोंसला, नेस्ट, अंडा, एग, बेचैनी, uneasiness,
अनजाने, casually or unknowingly. Okay. Shore, noise. Okay. Okay, dear student, these are the words. Din, day, safai, cleanliness, घास, grass, तिनके, straws, झाड़ू, broom, घोंसला, nest, अंडा, egg, बेचैनी, uneasiness, अनजाने, casually, shore, noise. Okay? Okay. Have you all underlined and wrote it? Okay. I hope all of you underlined it. Okay, now all of you listen. एक दिन रोहिणी घर की सफाई कर रही थी. One day रोहिणी was cleaning the house. उसे अलमारी के ऊपर घास फूस तिनके नजर आए. She saw some grass and straws on the top of almirah. उसने उन्हें झाड़ू से नीचे गिरा दिया. उसने उसे झाड़ू से नीचे गिरा दिया. She put it down using broom. She swept out. वह तो चिड़िया का घोंसला था. That was a bird's nest. उसमें से चिड़िया के 2 अंडे नीचे गिरे और टूट गए. From that, 2 of the bird's egg fall down and broke. Then, बाहर पेड़ पर वह चिड़िया बैठी थी. That bird was sitting on the tree, outside on the tree. Okay, बाहर बैठी थी. बाहर means outside. वह चू चू करने लगी. She started to make the sound choo choo. She started to make the sound choo choo sound. वह बेचैनी से पंख फड़फड़ाने लगी. She started to flapping wings uneasiness. She started to flapping wings with uneasiness or restlessness. Okay, then रोहिणी को दुख हो रहा था. रोहिणी was very sad. अनजाने में उससे गलती हो गई. अनजाने में unknowingly she make a mistake. अनजाने में उससे एक गलती हो गई. बेचारी चिड़िया के अंडे टूट गए. The poor bird's egg was broken. चिड़िया का शोर सुनकर अक्षर भी वहाँ आया. Hearing the noise of the bird, hearing the noise of that bird, अक्षर also came there. Who came there? अक्षर. कौन आया? अक्षर आया. उसने पूछा, मम्मी क्या हो गया? He asked to his mom, what happened mother? चिड़िया ऐसे क्यों कर रही है? Why is the bird behaving like this? He asked to his mother. Why is the bird behaving like this? Okay? Okay. तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. इसका remaining part we can learn in next video. Okay? Then all of you read this chapter at least 2 times. Then all of you write this difficult words in your notebook. Each words all of you write 5 times. Okay? Thank you.